Hello, good afternoon student. My name is Hiral Rawal. Today's date 21st December 2020. Standard 9th subject Science. Chapter number 12 Sound. In previous lecture we have performed some activity like vibrating tuning fork just touching the suspended table tennis ball. Then topic 12.1 Productions of Sound. Then we have studied 12.2 one of the pros of the vibrating tuning fork touching the water surface. From the above activities, we have concluded both the prongs of the vibrating tuning fork depend in water. Then we perform the topic 12.2 propagations of sound. Okay, and we have performed some activity. Then topic 12.2.1 sound needs a medium to travel. Okay, we have performed one activity. Now in this video we have studied characteristics of sound wave. So let's start. We can describe a sound wave by its frequency, amplitude and speed. A sound wave in graphic form is shown in figure 12.8c, which represents how density and pressure change when the sound wave moves in the medium. The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance above and below the average value of density and pressure. Figure 12.8a and figure 12.8b represent the density and pressure variations respectively as a sound wave propagates in the medium. Compressions are the regions where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve in figure 12.8c. The peak represents the region of maximum compressions. Thus, compressions are regions where density as well as pressure is high. Rarefactions are the regions or low pressures where particles are spread apart and are represented by the valley, that is the lower portion of the curve in figure 12.8c. A peak is called the crest and a valley is called the through of way. Okay, this is the crest and density variations के बारे में यहाँ पे बताया है. तो this is a speaker C R C R C R C. ओके, रेयर फ्रैक्शंस आर जो है वो रेयर फ्रैक्शंस है. देन यहाँ पे है प्रेशर वेरिएशंस सी फॉर क्रिस्ट और नीचे है टी फॉर ट्रफ, एवरेज डेंसिटी ऑफ प्रेशर. ओके, दैट इज द लोअर पोजीशन ऑफ द कर्व इन फिगर 12.8c. A peak is called the crest and a valley is called the trough of a wave. The distance between two consecutive compressions C or two consecutive reflection R is called the wavelength as shown in figure 12.8c. The wavelength is usually represented by lambda, Greek character lambda. Its SI unit is meter m. Then यहाँ पे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज की बात की है. This is the one of the famous scientists educated in the University of Berlin. Okay, he was born on 22nd February 1857. He confirmed J.C. Maxwell electromagnetic theory by his experiments. He laid the foundations for future development of radio, telephone, telegraph and even television. He also discovered the photoelectric effect
which was later explained by Albert Einstein. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी इन्होंने फाइंड किया था, बट लेटर जो है बाद में एक्सप्लेन जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया. द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी was named as hertz in his honor. Frequency tells us how frequency an event occurs. Suppose you are beating a drum. How many times you are beating the drum per unit time is called the frequency of your beating the drum. We know that when sound is propagated through a medium, the density of the medium oscillates between a maximum value and a minimum value. The change in density from the maximum value to the minimum value again to the maximum value makes one complete oscillation. Okay, ऐसा होता है, मैक्सिमम से मिनिमम और अगेन मिनिमम से मैक्सिमम तक पहुँचे तब एक ऑसिलेशंस कंप्लीट होता है. ये जो है वो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको क्लॉक का. हियर इज द बॉब. ओके, दिस इज इट्स पाथ. तो ऑसिलेशन सपोज यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ जाके लेफ़्ट से राइट होके वापस वो लेफ़्ट पे जाए तब वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है. मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम. सो कंप्लीटेड वन ऑसिलेशंस. द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव. Okay, here the again another definition what is frequency. So the such oscillations per unit time is the frequency of the sound wave. If we can count the number of compressions or rate fractions that cross us per unit time, we will get the frequency of the sound wave. It is usually represented by mu. Here the Greek letter nu and u. Its SI unit is hertz, symbol Hz. The time taken by two consecutive compressions or rate fractions to cross a fixed point is called the time period of the wave. In other words, we can say that the time taken for one complete oscillation in the density of the medium is called the time period of the sound wave. It is represented by the symbol T. Here T is a periodic time. The SI unit is second. Frequency and time are related as follows. हम ऐसे लिख सकते हैं F is equal to 1 upon T. We can write F is equal to 1 upon T. Okay. A violin and a flute may both be played at the same time in an orchestra. Both sounds travel through the same medium. दोनों के जो साउंड है वो सेम मीडियम पे ट्रैवल कर रहे हैं. दैट इज एयर एंड अराइव एट अवर ईयर एट द सेम टाइम. बोथ साउंड्स ट्रैवल एट द सेम स्पीड irrespective of the source, but the sounds we receive are different. This is due to the different characteristics associated with the sound. Pitch is one of the characteristics. पिच भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. कैसी पिच से आवाज़ लाउडनेस आती है ना, वो पिच से आती है. How the brain interprets the frequency of an emitted sound is called its pitch. The faster the vibration of the source, the higher is the frequency and the higher is the pitch, as shown in figure 12.9. Thus, a high pitch sound corresponds to more number of compressions and rarefaction passing a fixed point per unit time. Objects of different sizes and condition
vibration at different frequency to produce a sound of different pitch. Here the shapes, wave shapes for a low pitch sound. This is the diagram. Wave disturbance and wave shape for a low pitch sound. Wave shape for a high pitch sound. Low pitch sound has low frequency and high pitch of sound has high frequency. The magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called the amplitude of the wave. Okay, this is the definition. The magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called the amplitude of the wave. It is represented by the letter A. A से उसको डिराइव किया जाता है एम्पलीट्यूड को शोन इन फिगर 12.8c. For sound, its unit will be that of density or pressures. Okay, unit हम क्या बोल सकते हैं? Density or pressure. The loudness or softness of a sound is determined basically by its amplitude. The amplitude of the sound wave depends upon the force with which an object is made to vibrate. Okay, the loudness or softness of a sound is determined basically by its amplitude. The amplitude of the sound wave depends upon the force with which an object is made to vibrate. If we strike a table lightly, we hear a soft sound. ओके हम टेबल को स्ट्राइक लाइटली, लाइट टेबल हो उसको हम स्ट्राइक करें लाइटली, सो वी हियर अ सॉफ्ट साउंड बिकॉज वी प्रोड्यूस अ साउंड वेव ऑफ लेस एनर्जी, क्योंकि हमने लेस एनर्जी, लेस एम्पलीट्यूड वाला साउंड जो है वो प्रोड्यूस किया था. इफ़ वी हीट द टेबल हार्ड, अभी हम हार्ड से कोई टेबल को हीट करें, वी हियर अ लाउड साउंड, हमें बड़ी आवाज़ सुनाई देगी. कैन यू टेल वाई? यस, बिकॉज इट इज़ अ मोर एनर्जी, है ना. वी प्रोड्यूस साउंड वेव ऑफ मोर एनर्जी, ज़्यादा एम्पलीट्यूड का हमने आवाज़ की है, इसके लिए हमें लाउड साउंड सुनाई देता है. लाउड साउंड कैन ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस एज इट इज़ एसोसिएटेड विथ हायर एनर्जी. अ साउंड वेव स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स सोर्स. एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द source, its amplitude as well as its loudness decreases. Figure 12.10 shows the wave shapes of a loud and a soft sound of the same frequency. Here the diagram. वेव डिस्टर्बेंस और नीचे जो है वो सॉफ्ट साउंड है, और टाइम के जो वर्सेस है एक्स वर्सेस वाई का, उसका डायग्राम है. यहाँ पे भी ऐसे ही है, वेव डिस्टर्बेंस है ऊपर, नीचे टाइम है, और ये लाउड साउंड है, ये सॉफ्ट साउंड है. देखिए आप इसके पिच कितनी छोटी है ना. सॉफ्ट साउंड का हम देख सकते हैं कि सपोज यहाँ है तो ऐसे धीरे धीरे, ओके ऐसे है. और जो लाउड साउंड है उसका कैसे है, एकदम ऊपर ऊपर है, ऐसे हाई पिच है, हाई पिच. ओके, soft sound and loud sound. The quality or timbre of sound is that characteristics which enables us to distinguish
one sound from another having the same pitch and loudness. The sound which is more pleasant is said to be a rich quality. A sound of single frequency is called a tone. सिंगल फ्रीक्वेंसी का होता है जिसको हम TONE टोन कहते हैं. The sound which is produced due to a mixture of several frequencies is called a knot, N-O-T-E, knot, and is pleasant to listen to. Noise is unpleasant to the ear. Noise जो बड़ी आवाज़ होती है वो unpleasant होती है, जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती है. म्यूज़िक इज़ प्लेजेंट टू हियर एंड इज़ ऑफ रिच क्वालिटी. म्यूज़िक जो है, लाउड म्यूज़िक भी हमें सुनना अच्छा लगता है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है. स्टूडेंट्स, हियर द क्वेश्चंस, इन बिल्ट क्वेश्चंस आर देयर. फर्स्ट, विच हैव प्रॉपरली डिटरमिन्स लाउडनेस या पिच क्या होना चाहिए. सेकेंड है गिव गेस विच साउंड हैज़ हायर पिच. गिटार और कार हॉर्न, किसकी पिच ज़्यादा होगी. तो कार हॉर्न की पिच ज़्यादा होगी. पिच पे डिपेंड करता है ना सब. प्रॉपर डिटरमिन्स पिच. द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज अ कॉम्प्रेशन और अ रिफ्रैक्शन ट्रैवल्स पर यूनिट टाइम. वी नो स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम. Distance means के d upon t. Here lambda is the wavelength of the sound wave. It is the distance travelled by the sound in one period t. The wave, thus the v is equal to lambda into mu. यहाँ पे लिखा है 1 upon t. क्या लिखा है 1 upon t, जो क्या हुआ mu हुआ. और v is equal to lambda into mu. That is speed is equal to wavelength into frequency. स्पीड की डेफिनेशन हो सकती है स्पीड l is equal to wavelength into frequency. This is the equation. सो एग्जाम्पल है यहाँ पे. अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़. 2 किलोहर्ट्ज़ दिया है. किलोहर्ट्ज़ को पहले हमें हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा. किलो है तो 2000 हर्ट्ज़ हमने कर दिया. और वेवलेंथ लेम्डा कितनी दी है 35 सेंटीमीटर. 35 सेंटीमीटर है जिसको हम क्या करेंगे MKS में कन्वर्ट करेंगे. तो 35 सेंटीमीटर तो 0.35 होगा क्योंकि 35 अपॉन 100. सो वी राइट 0.35. देन यूज़ द इक्वेशन. हमें इक्वेशन यूज़ करना है. ओके, स्पीड का इक्वेशन क्या होगा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. सो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू. 0.35 इंटू 2000 हर्ट्ज़. तो कैंसिल कर सकते हो ना आप. 35 अपॉन 100 इंटू 2000. 0 0 0 0 कर. 35 2 70 और एक 0 मीटर पर सेकंड. ओके, the time taken by the wave to travel a distance d is 1.5 kilometer. This sound will take 2.1 second travel distance of 1.5 kilometer. ओके, ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है. यहाँ पे अगेन इनबिल्ट क्वेश्चंस है. व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव. ये सबकी डेफिनेशन आगे जो है वो पोर्शन में आ गई है. ओके स्टूडेंट, तो आपको लिखना है. देन हाउ आर द वेवलेंथ एंड साउंड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड wave whose frequency is 220 Hz and speed is 440 meter per second a given medium. Then second question है how are the wavelength and frequency of a sound wave related to its speed. Then third है calculate the wavelength
of a sound wave whose frequency is 220 Hz and speed is 440 मीटर पर सेकंड अ गिवन मीडियम। ये एग्जाम्पल है, आपको काउंट करना है, आज का होमवर्क है। ये फोर्थ है, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन 500 Hz सिटिंग इन अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन अ सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द साउंड। ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।